Shocker from Uttar Pradesh. The government there has suspended a sub-inspector who brutally smashed the typewriter of a 65-year-old typist in the heart of the state capital, Lucknow. Trouble started when sub-inspector asked Pradeep Kumar to vacate the premises where he's been working 10 hours a day for many years. When Pradeep protested, the policeman reportedly abused the elderly man and kicked the typewriter till it broke. The brazen cop then reportedly bragged the incident in front of reporters who caught the incident on camera. The pictures then went viral on social media, and Chief Minister Akhilesh Yadav ordered the suspension of the sub-inspector. सर 12 बजे के टाइपराइटर मशीन लगाए हुए थे, तो दुर्गा प्रदीप चौकी इंचार्ज हैं हजरतगंज चौराहे के, ये उधर से निकले और गाली देते हुए उन्होंने उठा के पहले टाइपराइटर पर लात मारी और उठा के टाइपराइटर सड़क पर फेंक दिया। फिर आपने क्या किया? फिर हमने साहब कुछ नहीं किया, फिर हम चुपचाप टाइपराइटर सामान बटोरा और काफी इंतजार करते हैं, फिर कुछ नहीं हुआ तो टाइपराइटर के अपने घर आ गए। कब से लगा रहे थे वहाँ? हमको 35 साल हो गए। कहाँ पे लगा रहे थे? कब से लगा? जीपीओ गेट के पास में।